क्या है कॉलन जो है वो यूज़ होता है टू इंट्रोड्यूस और एम्फोसाइज समथिंग पर ओनली आफ्टर एन इंडिपेंडेंट क्लॉज और कंप्लीट सेंटेंस. What follows the colon can be a list, a restatement, a quotation or explanation. तो colon की से आप एक कर सकते हो introduce a list, जैसे कि she brought 3 things to the interview: her resume, her portfolio and a letter of recommendation. आप प्रोवाइड कर सकते हो an explanation or clarification. He faced with the difficult decision, colon, move to a new city or turn down the job offer. या फिर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो एक नई quotation. The professor began in a lecture with a reminder, never underestimate the power of revision. अच्छा इसमें 2 कॉमन एरर्स टू अवॉइड हैं. प्लेसिंग अ कॉलन आफ्टर डिपेंडेंट क्लॉज, इट इज़ इनकरेक्ट because let's look at 2 examples. Because she studied all week, colon, she passed the exam. She passed the exam for one reason: she studied all week. This is the correct way. We have put the dependent clause before using a colon within a list. So if we say the options are the options are apples, oranges and grapes. Instead, it should be just the options are apples, oranges and nuts. So within a list आप colon use कर सकते हैं. Let's talk about dash